So today, Bismillahirrahmanirrahim, today we were supposed to do the talks, right? और जी सर फोरेंसिक और रिसर्च और हमारे लिए जो इन्वेस्टिगेशंस थी उसके स्टेशंस की बात हुई थी। और भी कोई जी स्टेशंस सर करना हो तो बता दीजिएगा। 2-3 टॉक स्टेशन जी हम Wednesday को कर लेंगे। एक लॉन्ग केस हम फ्राइडे को अगले कर लेंगे। Then we'll be done Friday or जी Saturday, whatever सर suits you. आपने वेडनेसडे भी कहा था शायद। वेंसडे को लॉन्ग केस करना है कि टॉक्स करनी? सर जो आपको बेटर लगे, लॉन्ग केस कर लेते हैं। ठीक है, वेंसडे को फिर लॉन्ग केस कर लेते हैं और फ्राइडे या सैटरडे को एक दफा टॉक्स कुछ स्टेशंस रिपीट कर लेंगे जी सर और श्योर। देन रैप इट अप। ठीक है जी सर एक मिनट ओके। बस एक मिनट दीजिएगा। कोई पूछ रहा है कि क्लास कब स्टार्ट होनी है। चले ओके, जवाब दे दिया। जी जी सर। ओके, लेट्स देन स्टार्ट। और ओके, so the first station related to forensic, uh, let me open up. Okay, so this is an article which was published in British Journal of Psychiatry, right? जी You are going for that, right? जी सर। So the article is related to crime and punishment, Pakistan's legal failure to account for mental illnesses. It is by Ramsa Kaisar Khan and Abdul Maiz Khan. Uh, Now you have to respond to two things. So it जी will सर। be two stations with one. One जी is that you will just go through this article हम्म and give me the pros and cons of the article, which I mentioned here. So second, after this, I will ask you some related questions to these things. ओके सर। So it will be ओके two सर stations. आएगा। One station is related to the article. What is जी this? जी How, what do you think are the important features in the article and what are your comments about it? This is the first station. And the जी second station, I will ask you questions related to it. ओके सर। Clear? जी सर। Okay, let's start with the first one. Read the हम्म article हम्म and then give me your comments about this article. When ओके you want, I can scroll it down. जी सर। So the time starts now. ओके सर। जी सर थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर दें बस। जी सर और हम्म यस सर और करने नीचे। हम्म ओके सर। Got it? यस सर। Okay, now you have to tell me about the article.
What do you think? Sir, can I just see the title of the article once again? Just the title. Sure. Okay. Okay. Uh, Sir, so this is an article that is basically describing crime and punishment and the related uh, problems and scenarios in Pakistan. Basically, it is a type of secondary research that has been done here. And if I go into further details, it is basically a narrative review. Which has reviewed information in a broader sense and no and in narrative reviews actually there is no uniform criteria of a study selection and no quantitative or qualitative analysis is done and the person who is doing a narrative research just goes through the literature and information available on the internet or maybe in person according to his or her own expertise and then jot down the information in a narrative form so that any reader can obtain the relevant information from that research. I have skimmed through the article. Um the title of the article is in accordance with the information provided in the article is in accordance with the title, and it is a detailed article, uh, detailed and comprehensive article, which is providing the information about the. It is basically an article of 2021, as far as I can remember. Yes, it was published in BJ Psych in 2021 November by Rumesa Keser Khan and Abdul Moiz Khan. And it is providing us the information about the Pakistan's legal failure to account for the mental illness and the steps that should have been taken after the mental health ordinance was passed in 2001 and the lackings that were still present at the time the article was published in 2021. It has taken in account various cases that were affected due to a lack of laws for mentally disordered persons and the article do show some exception where some mentally disordered persons benefited from the mental health ordinance as well, but it highlights the areas that need to be worked upon. These are the pros of this article are that this provided information can be kept as a baseline to work for more effective laws in the future for mentally disordered persons. And the cons are that it is just a narrative review. It can be made more effective if qualitative or quantitative research, or if a systematic review or meta analysis is done and more researchers are added uh, into the systematic reviews and the meta analysis. So that's Okay. it. So, in your opinion, is it a good article or is it not? So I think it is a. I just can't comment black or white that it is a good article or not. I think we can obtain some information from it, and on basis of it, we can do a more advanced study, and we can work on betterment of laws for mentally disordered persons. So, this was basically either a commentary or a review article, right? Yes, sir. Yes, sir. It was a narrative It was review. not a research article, it was not research, Yes, but sir. it was more related to the review or a commentary or a short summary of the Yes, situation, sir. It was a right? literature search that was based Literature, on the expertise of the authors. right. And what
precisely they want to highlight? Sir, they basically they want to highlight. First of there are two to three things that I gathered. They want to highlight the lack of public awareness regarding the mental health. Then the main thing they want to highlight is the lack of effective laws for the mentally disordered persons. These are the two things. So, in conclusion, they said, this is the statement given by them: there is no denying that the insanity plea is frequently used as false defense. However, it is essential not to lose the sight of the people who are actually suffering from mental diseases that bar their capacity to have a sound mind with a mens rea, criminal intent, and the understanding of the consequences of their acts, actus reus, criminal act. To that end, it is our recommendation that in sensitive matters such as blasphemy cases, Hmm. every mentally ill criminal should be reviewed by an independent psychiatric board to determine the competency to stand trial. Basically, what they intend to say is that most common phenomena where mental health law or act is unfortunately missed is the blasphemy cases, right? वॉशरूम में करके आओ. Okay, sir. And because of this blasphemy cases problems, most Hmm. of the sane people who are doing this, they probably are Hmm. not convicted, and most of the people who are not mentally stable are convicted. Hmm. And there are few cases very much highlighted in the media, uh, and they gained lots of popularity, Hmm. right? So basic Hmm. crux of the matter is they want independent psychiatric opinion of every patient who is involved in the blasphemy case. This is the summary of the article, Okay, right? sir. Okay. So a board should be made, recommendation, a board should be made. So whenever Hmm. you are reading an article, Hmm. two, three things that are very important. One, जी you sir. don't have to go through the whole article, but it will take you lots of time. You Hmm. understand that. So Hmm. when you start, always try to read the abstract as a whole, Hmm. right? Hmm. Abstract tells us most of the information. Since then, Hmm. the most of the amendments to have been delineated, the jurisdiction of the provincial government's failure to account for mental illnesses brings a unique challenges, blah, blah, blah. Hmm. Then important part is because it's a review, so you Hmm. should try to read the headings mostly. Hmm. Evolving crisis in Pakistani mental health care, history of mental health legislation in Pakistan, legal framework and sample cases, and Hmm. then conclusion next step. Hmm. So if it is a research article, then Hmm. you should read methodology, which is a Hmm. very important component in a research article, Hmm. and conclusion and summaries. The जी sir. discussion part, which is usually a lengthier one, we Hmm. can just scroll through it, not Hmm. necessarily everything in it. Hmm. Abstract, the title, the Hmm. publication where it was published and which date and who were the authors, Hmm. then title matching the rest of the study, and Hmm. then abstract, and then the conclusion. जी In sir. between, if there is methodology involved in a research article, Hmm. methodology results are important as well, जी sir. right? So this is an important. So because you have just 8 minutes, in eight Okay sir. minutes, it's difficult to go through everything. So all you have to do is to read the top thing. This article जी. was published in British Journal of Psychiatry in 2021, November 18th. The page number was given as well. The title says Crime and Punishment Pakistan's Legal Failure to Account for Mental Illnesses. It was Hmm. published by two authors. The abstract signifies that the federal mental health law is converted into the provincial mental health law after the powers were given to the provinces. And they Hmm. want to highlight that there is definitely a gap in Hmm. actual practicality. And in special cases where there are problems associated, like in cases of blasphemy, the Hmm. psychiatrist should be engaged, involved in the assessment so they Hmm. can assess whether the patient did that act
according to the law, with the sane mind or insane mind? Is it he Hmm. fit to stand trial or not fit to stand trial? Right? So this Okay. is how to proceed with the general things. Right? Okay, sir. Okay, Okay. sir. This is fine. You have done okay. So it's not too bad, but make sure the Yes, time. sir. Okay, Uh, sir. you took around 4 minutes. Hmm. You should be at least spending 7 minutes. Don't Okay, let sir. the examiner ask the question too much. Okay, sir. Okay, noted. Try to read the article relatively again in time. So you have 7 to 8 minutes. Hmm. First, go through the article. Take about 2 to 3 minutes for it. Then Okay, take sir. a minute to assess your own things, 3 minutes. And then Hmm. fourth to seventh minute, in 3 minutes, you should present. Okay, sir. So Noted. timing is very, very important and crucial in this situation. Okay, If you sir. stop earlier, it will Ji. give the examiner to ask you more questions, time to ask you more questions. Okay. So try not to give much of the time to the examiners, Okay, sir. right? Bilkul. So Ji. when the article is there, well ranked, you just go to that there, read the Hmm. article, the title, the abstract, the methodology, the results, and the conclusion and the limitations. And then try to think about it. What are the problems associated, which you have highlighted very clearly, which is a good thing. And then express yourself slowly so that you'll be able to spend at least 3 minutes. And the last Okay. 1 minute, the examiner will be asking you the questions if they have Okay, any sir. in the papers. If they don't have the questions in the papers, then they should ideally not be asking the questions. But some Okay. of the examiners, despite the fact that they are asked not to ask the questions, they do ask. So it's Hmm. unfortunate, but try not to give them too much time to ask you too many questions. Ji, sir. Clear? Ji. Okay. So should we go for the second thing, forensics? Yes, sir. Okay. Yes. Now I will ask you a series of questions. What is your recommendation regarding the provincial mental health? Which provincial mental health act mentions about the suicide? And do you think Hmm. that it is an important component to be addressed in mental health legislation? So three questions. Okay. Sir, I have not gone through the provincial mental acts abhi recently. I think I'm confused between two options. I might be wrong. I think Sindh or Punjab. इनमें से एक है. सिंध में Sindh. सिंध में Okay. ठीक है Sindh. सिंध में जी. प्रोफेसर हारून साहब ने चेंजेस करके उसको कुछ बेहतर करने की कोशिश की थी पंजाब वाला इज एब्सोल्युटली अ कॉपी ऑफ द फेडरल मेंटल हेल्थ एक्ट Okay. Okay. और Okay. एपी नहीं. के they are trying to do some more advancements and amendments but I am not sure whether they were done or not so KP के students अगर कोई हैं तो they will be the better judge so Okay. पहली चीज अगर आपको नहीं पता Hmm. तो यहाँ से स्टार्ट नहीं करना कि आई हैवंट रेड इट रिसेंटली Okay. वो तो मैं आपको कह रही थी. मैं नहीं आप एग्जामिनर ठीक है. सो Noted. Noted. यहाँ से स्टार्ट नहीं करना अगर जी जी आपको सर. नहीं पता ठीक है जी. सो आराम से सोच के बात करें कि जी कंसिडरिंग व्हाट द फेडरल मेंटल हेल्थ लॉ व्हेन पास्ड इन 2001 व्हिच वाज रिप्लेसिंग द लुनेसी एक्ट अब थोड़ा सा टाइम लगा Hmm. so Literacy Act was actually again an old law with old Hmm. British terminology. It Hmm. was being used for a number of years, rather probably almost a century. And then Hmm. there was need to modify it. And in Hmm. 2001, the Mental Health Act was passed in the Assembly. Hmm. This Mental Health Hmm. Act, although
was passed because, again, there were so many ifs and buts related to it. But as there was a need to change, so there were some changes and improvements. But of course, there are lots of deficiencies and lots of things needs to be covered. अब आप थोड़ा time जाए. As far as the provincial, so in 2014, the powers were disseminated from federal to the provincial again, and every province was advised to have mental health act there of their own. So the Punjab copied and pasted the whole of the federal mental health, and it was passed through the assembly. In Sindh, it was passed as such, but Professor Haroon Ahmed definitely felt that there has to be changes in it, and he proposed some amendments which were approved and they are now practiced. Suicide was not addressed as it should be addressed in mental health, federal mental health law of 2000. It is also not very significantly addressed in Punjab and other provinces, but in Sindh, there was some improvement. The suicide, the homicide, and few other important areas were also highlighted. Because I am a resident of Punjab, so I was not having an exposure to the Sindh mental health. However, I know this much information that there were changes and improvements, and similarly, the changes are needed to be done in all other provinces, incorporating all the latest socio-cultural and other stigma-related situations into the mental health ordinance. Okay, sir. So, आपको ये जो बयान देना है उनके सवाल के जवाब में, it should be minimum of 2-3 minutes. Okay. और 2-3 मिनट कवर उस वक्त होंगे जब आप पीछे से शुरू करें और आहिस्ता उस आप करंट सिचुएशन पे लाएं, और उस करंट सिचुएशन में अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं पता, क्योंकि नहीं पता, सारों को नहीं पता, वहां पे आपने एक शुगर कोटेड सिचुएशन कोट कर देंगे. I'm from Punjab. I know about the Punjab mental health. Ideally, I should be aware of all the changes happening across Pakistan. However, I to know that there were some changes made in Sindh mental health law, and there are some efforts happening in KPK as well. In Punjab, the suicide and related issues were tried to be addressed. Currently, as far as my knowledge is concerned, I'm not aware if there were further improvements in Punjab. However, they are needed and they should be addressed. Okay. Okay, sir. हो जाएगा. जी जी हो जाएगा, बस एकदम से वो मैं कंफ्यूज एकदम से हो गई थी. कंफ्यूज, ये तैयारी इसीलिए है कि एकदम से जी कंफ्यूज नहीं होना. राइट. जी जी जी. आपको थोड़ा सा एक बात आप सबको बता दूं, आप सब माशाल्लाह 4-4 5-5 साल साइकियाट्री में काम कर चुके हैं. सो नॉलेज आप सबका है. उस वक्त एग्जाम में स्ट्रेटेजिकली कैसे बोलना है, ये प्रॉब्लम. नॉलेज की कमी नहीं होगी, और जाहिर है पंजाब में रहते हुए आपको सिंध मेंटल हेल्थ एक्ट का क्या पता चलेगा. ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल बात है, लेकिन आपको इतना वर्बल होना है कि उसको जवाब देने में शुगर कोटेड जवाब दें. स्ट्रेट अवे ना करें मुझे नहीं पता. राइट. जब आप कहेंगे मुझे नहीं पता, वो कहेगा जी लो जी फ्लैट. सो टॉकिंग स्लोली. और फिर ऐसी सिचुएशन में बेस्ट ये होता है कि पीछे से शुरू करें. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कहते हैं जी कि मेंटल हेल्थ एक्ट में ब्लास्फेमी की सजा क्या है, पता है आपको जवाब का? एनीबडी तो पता है जवाब का? एनीबडी चैट बॉक्स में लिखें. एनीबडी who can respond to my question. What is the punishment for blasphemy in Mental Health Act? Anybody?
कोई नहीं पता। देयर इज नो पनिशमेंट ऑफ ब्लास्फेमी इन मेंटल हेल्थ एक्ट। और मैंने यही सोचा था सर, ऑनेस्टली आई वाज थिंकिंग दिस। सोचना नहीं है, सोचना नहीं है, हम्म बोलना, सोचना हम्म नहीं। आप आराम से कैलकुलेटिवली होके सोचें कि अभी तक ब्लास्फेमी के केसेस में जिन लोगों को सजाएं होती हैं, तो क्या हम्म वो मेंटल हेल्थ एक्ट के बेसिस पे होती हैं? नहीं। नहीं। ब्लास्फेमी का एक्ट एक जनरल लॉ का हिस्सा है, और हम्म जनरल लॉ में वो जो क्रिमिनल लॉ है हम्म उसमें ब्लास्फेमी की सजा सजाए मौत है। हम्म हम्म उसका मेंटल हेल्थ एक्ट से ताल्लुक नहीं है। ओके। लेकिन हम ये कहते हैं एज साइकियाट्रिस्ट कि जो हम्म लोग ऐसी हरकत करते हैं उनमें साइकियाट्रिक मोबिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि इस आर्टिकल में भी हम्म बयान। ठीक है। सो हम्म क्योंकि उनमें साइकियाट्रिक मोबिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, सो हम्म इसलिए वो मेंटल हेल्थ जो है ना उस डिसऑर्डर के इफेक्ट में they may be not हम्म fit to stand trial, or they may not be again insanity plea, वो जो भी टर्म्स वो यूज करते हैं वो जी, उसमें स्टैंड नहीं करते। सो फिटनेस दैट टू इज, प्ले। और यही चीज को आपने फिर एग्जामिनर को स्लोली बताना कि जी एज फार एज माय नॉलेज इज कंसर्न, ये अल्फाज बहुत इंपॉर्टेंट है। एज फार जी। एज माय नॉलेज इज कंसर्न, आई थिंक दैट there is some controversy about it. I'm not very clear about the concept, but in my knowledge, the blasphemy is not punishable through the Mental Health Act or law. It's basically a criminal offense, and हम्म it is trial, and the patient is given a trial, considering that it's a crime. हम्म However, we as a psychiatrist believe that most of the people who are involved in the blasphemy, they do हम्म suffer from some psychiatric morbidity. Otherwise, no sane person will commit a crime like this. Okay? So the psychiatric हम्म morbidity in these patients is high. And even in this article, it is mentioned that there has to be a board of psychiatrists who will be able to assess these people. Ideally speaking, all patients जी। who do some crime and they are हम्म punished, they should be हम्म assessed by the psychiatrist, जी। ideally. लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान में साइकाइट्रिस्ट थोड़े हैं, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, हम फोरेंसिक साइकाइट्रिस्ट हैं नहीं, सो इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन ये होना चाहिए। सो इस पे एक ना एक बयान अपना जारी करें, बयान करें स्लोली केयरफुली। बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता, उसको कंसिडर में करते हुए चुप नहीं रहना, या ये नहीं कहना कि जी मुझे नहीं पता। ओके एग्जाम में एग्जामिनर ये नहीं सुनना चाहेगा, वो ये सुनना चाहेगा कि जी जी। आपकी क्या, आपके जी मेरी ओपिनियन ये है कि ब्लास्फेमी जो है वो तो एक क्राइम है और उसकी सजा जो है वो डेथ है। मेंटल हेल्थ हम्म लॉ में इसका, अब ये आर्टिकल आपने पढ़ लिया, आपको क्लियरली अंदाजा हो जाना चाहिए इस आर्टिकल जी से कि मेंटल हेल्थ एक्ट में कोई इसका ब्लास्फेमी का एज सच वो सजा और जजा नहीं। जी। लेकिन क्योंकि ब्लास्फेमी एक ऐसा कल्चरल, सोशल और साइकाइट्रिक प्रॉब्लम है जिसमें बहुत हम्म सारे पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं, तो वी feel that a psychiatrist should be engaged to assess the mental health of a patient who is suffering from that. If there is a psychiatric morbidity, then these हम्म people should be taking advantage of the Mental Health Act, and they should be again considered in that picture, in that scenario. इस तरह ओके का सर। कोई जवाब 2-3 मिनट का, फिर वो अगला सवाल मजीद आपसे इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। ओके सर, आई हैव अ क्वेश्चन। ये हाँ, बात हो रही है तो मेरी ना मेरी कंफ्यूजन है व्हेन वी ये मेंटल हेल्थ एक्ट तो हम पढ़ते हैं, जो वो जो होता है पाकिस्तान पेनल कोड जिसमें वो देयर इज अ सेक्शन 325 सुसाइड इज नो मोर अ क्राइम, व्हाट इज दैट, व्हाट इज पाकिस्तान वो पेनल क्रिमिनल कोड? एक्ट है, वो क्रिमिनल एक्ट। क्रिमिनल। वही ओके। वही एक्चुअल लॉ तो वो है ना, वो हम्म क्रिमिनल एक्ट का लॉ है। जितने भी ये ओके। कोर्ट में केसेस चलते हैं, किसी को हम्म मारा, किसी को झगड़ा किया, किसी के साथ लड़ाई हो गई,
वो सारे केसेस क्रिमिनल में आते हैं। ओके ओके या आप ये समझ लें, इसका दूसरा वर्ड होता है सिविल सूट्स। ओके ओके सिविल सूट्स हैं। फिर इसमें एक फैमिली कोर्ट्स में अलहदा एक सेक्शंस होते हैं, वो फैमिली कोर्ट के हवाले से चलते हैं, और इसमें कुछ और डाइवर्सिफिकेशन है. सो वी आर नॉट द लीगल एक्सपर्ट्स इन दैट, सो आई कैन नॉट कमेंट, बट दैट इज अ जनरल लॉ. ओके Our main concern as a psychiatrist is that in general law, because the psychiatric morbidity in general population is high, so if a patient commits a crime, जो कि हम generally बात करते हैं, because he was mentally sick, so according to mental health law, he should not be again punished for it because he was not having a sane mind. So फिर वहां पे हम forensic ये सारे कानून हम सारे लेकर आते हैं. ओके So, अगर किसी ने मर्डर कर दिया किसी का, ठीक है, अब जाहिर है मर्डर इंटेंशनल था, दुश्मनी थी, खानदानी चल रही थी, लेकिन अगर वो किसी भी स्टेज पे वो पेशेंट जिसने मर्डर किया है वो प्ली ले लेता है कि जी ये शख्स जो है ये तो मेंटली हेल्दी नहीं है, तो फिर उसकी असेसमेंट होती है. फिर उस पर असेसमेंट करके जो मेंटल हेल्थ लॉ के मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं कि फिट टू स्टैंड ट्रायल और पनिशेबल और अनपनिशेबल वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें डिस्कशंस में आती हैं. ओके ठीक है ठीक है, सो उसको डिस्क्रिमिनेट करें दोनों चीजों को और उनको उसी हिसाब से लेकर चलें. ओके ओके Anybody else, any other question? No question. सारा समझ आ गया, ये कुछ समझ नहीं आया है? नहीं सर, बड़ा अच्छा समझ आया, ये बड़ा अच्छा आपने बताया. और भी कोई फोरेंसिक से रिलेटेड कोई ऐसे पूछे एक हैं? और ट्रिक से करते हैं जो रिसर्च और फोरेंसिक्स दोनों को कवर करेगा. जी चलें शुरू हो जाए. ये आर्टिकल है, इसको देखें, फिर इस पे बात करते हैं. ओके सर. This was published in 2016 August in British Journal of Psychiatry International, right? This is not a Journal of Psychiatry, by Amna Tareen and Khalda Tareen. Professor Khalda was a child psychiatrist in King Edward Medical University. She's a retired professor now. ये उन्होंने publish किया है as one of the author, right? और abstract इसका ये क्या है? According to the abstract, it is saying that it was the constitution recommended that every province should publish their own mental health acts, but currently only the provinces of Sindh and Punjab have So a this is mental health act in place. 2016, right? Yes, sir. 2014 में प्रोवेंशियल पावर्स डेजिग्नेट हुई थी. क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं कि वो पावर्स जो है वो प्रोविंसेस के पास आ गई थी 2014 में हिस्टोरिकली. 2016 में पंजाब में अप्रूव हो गया और सिंध में भी अप्रूव हो गया. केपीके में और बलूचिस्तान में नहीं हुआ, वहां पे बाद में हुआ. और फिर ये उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, इसको भी रीड कर लें, फिर सवाल पूछता हूँ. जी सर. बेसिकली वही बातें, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है जो उस आर्टिकल में तो जो अभी हम कर रहे थे वही बातें हैं सर. वही बातें हैं तकरीबन. सर इसमें डिटेंशन ड्यूरेशंस पे बात हुई है. पढ़ लो एक दफा आराम से. ठीक है, ये जो आप डिटेंशन की बात करें वो बात आ गई. ठीक है, और करंट सिचुएशन में प्रोवेंशियल रिफॉर्म्स की ये बात कर रहे हैं. 2010 में फेडरल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी डिसॉल्व हुई थी. सो 2010 14 नहीं था, मैं बार बार 14 याद कर रहा हूँ. फिर 2014 में वो अप्रूव हुआ था, वो आप सही कह रहे हैं. राइट, अप्रूव 2014 में हुआ था. 14 ही फंसा हुआ था.
ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 2014, so it was जी हाँ, वो reported 2014 ही था। because I was there, so I know कि वो कैसे हुआ था। अच्छा, इसका कंक्लूजन भी देख लें आर्टिकल का। There is a need for stakeholders such as patients, advocacy groups, families, and mental health professionals to join hands to exert political pressure so that an appropriate mental health legislative framework is in place for population of Pakistan. Unfortunately, experiences shows that drafting, approval, and implementation of legislation is often subject to prolonged delays. Got it? जी Okay. Now the question is, यस सर। ये जो डिटेंशन लॉज इसमें इन्होंने मेंशन किए, जी for any patient who is again, we as a psychiatrist wants to give him treatment जी according to mental health law, what is the strategy? Sir, if we want to admit a patient for treatment, then we'll admit him under the section 11, and for that, an application has to be given. There is a form of that application in which an approval from a medical officer and an approved psychiatrist is needed, and that form is submitted to the magistrate, and then we can admit the patient for treatment. And according to this section, if the admission request is approved, then the patient can be detained for up to 6 months for treatment. And if during the period तो of that पहले before. पहला क्या है सेक्शन? पहला सेक्शन ये है कि आपने सर डिटेन, पहला है एडमिशन फॉर असेसमेंट है, वो 10 है, लेकिन आपने ट्रीटमेंट का पूछा तो आई डिड तो फिर आप मतलब वहां से, मैंने पहले कहा कि देखो आपके पास टाइम है, ओके सो अच्छा हिस्टोरिकल पीछे से चलो, आप ओके जीरो से, अच्छा आपको जी ये सेक्शन ये कहता है कि मैं 14 घंटे के लिए, 14 दिनों के लिए एडमिट करूंगा, उसमें ओके असेसमेंट, फिर ये दूसरा सेक्शन लगाऊंगा जिसमें वो 28 दिनों के लिए एडमिट होगा, ओके फिर ओके तीसरा ऐसे सेक्शन ही लगा है। जिसमें मैं उसकी ट्रीटमेंट करूंगा, कंपल्सिव ट्रीटमेंट। सर तीसरे सेक्शन में अर्जेंट एडमिशन है और फोर्थ में इमरजेंसी होल्डिंग है। इनमें से कहीं पे भी किसी में डायरेक्ट बात नहीं है इलाज की, ये सब असेसमेंट से रिलेटेड है। यस सर। नहीं सर, जो सेक्शन 11 है, सॉरी मैं अपनी करेक्शन के लिए पूछ रही हूँ, वो तो एडमिशन फॉर ट्रीटमेंट है, दैट if a person is suffering from some severe mental illness or for which the treatment is necessary and he cannot take that treatment on voluntary basis in community, then he may be admitted in a psychiatric facility for treatment up to 6 months. वो सेक्शन अप्लाई कब होता है? सर वो सेक्शन तब अप्लाई होता है दैट इफ मैंने इसके याद की थी, 3 चीजें थी। इफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल इलनेस, स्वेयर मेंटल इम्पेयरमेंट और स्वेयर पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब ये पता चलेगा कि ये पेशेंट जो है वो मेंटली इल है? सर वो तो असेसमेंट से ही पता चलेगा, आप ठीक कह रहे हैं। तो यही तो बच्चे में बात कर रहा हूँ ना कि आपने जी जब जी बात करनी तो थोड़ा सा उसको लंबा करो ना, तुम्हारे ओके पास सर वक्त है, वहां पे वो फिर एग्जामिनर सवाल फेंकेगा मेरी तरह बार बार, ओके और तुम लोग कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज क्यों होना चाहते हो? शुरू ही वहां से करो। जी जी पहला सेक्शन है जिसमें वो 14 दिनों के लिए डिटेन किया जाता है कि ये पहला सेक्शन ये है जो 14 दिनों के लिए डिटेन करता है फॉर असेसमेंट। फिर दूसरा सेक्शन है जिसमें वो 28 दिनों के लिए डिटेन होता है, उसमें भी असेसमेंट होती है। फिर आप सेक्शन 11 की बात करेंगे कि अगर वो साबित हो गया कि वो मेंटली इल है तो फिर उसको कंपल्सरी ट्रीटमेंट देनी है, उसके लिए फिर हम सेक्शन 11 लगाते हैं और फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। सो लॉ के नजदीक यस सर। पेशेंट को ट्रीटमेंट हम जबरदस्ती उस सूरत में दे सकते हैं जब ये साबित हो कि वो मेंटली सिक है।
और वो साबित करने के लिए उसकी असेसमेंट चाहिए। अब असेसमेंट दो तरीके की बात है, या तो असेसमेंट पहले हुई भी थी और वो नॉन साइकियाट्रिक पेशेंट है, जी सर, या आपने उसको असेस करना है अगर वो पहली दफा आया है। ओके, दो ही पॉसिबिलिटी ना, तीसरी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जी सर, सो जो अगर वो पॉसिबिलिटी ये है कि वो नॉन साइकियाट्रिक पेशेंट है, सेक्शन के तहत फिर आप सारी चीजें बयान कर दें। लेकिन अगर वो ओके, नॉन साइकियाट्रिक पेशेंट नहीं है, पहली दफा आपको जेल में भेजा गया, इसको देख लें, जी जी, इसने फिर मर्डर किया, असेसमेंट किसी होगी का, बाद इसको में। देख लें। तो आप क्या करेंगे? फिर आप 14 दिनों के लिए डिटेन करेंगे, असेसमेंट करेंगे, अपनी रिपोर्ट बना के देंगे कि ये साइकियाट्रिक पेशेंट है। फिर आप उसको सेक्शन दूसरे, सेक्शंस के नाम मुझे नहीं याद रहते, आई एम सॉरी, मैं वो नहीं बोल सकूंगा। सर वो 10 है 28 डेज के लिए असेसमेंट, 11 है 6 मंथ्स के लिए ट्रीटमेंट, 12 है अर्जेंट ट्रीटमेंट फॉर 72 आवर्स, और फिर हाँ, 13 होता है इमरजेंसी होल्डिंग ऑफ एन ऑलरेडी एडमिटेड इन पेशेंट फॉर अप टू 24 आवर्स। ये वेरी। अब इसमें देखो जो सेक्शन बाद में बोले, इमरजेंसी होल्डिंग वाला, जो जी होल्डिंग वाला भी है ना, उसमें रिटेन आप कर रहे हैं उसको, जी जी उसका इलाज नहीं कर रहे। जी, और उसके लिए भी एक और सेक्शन भी है, वो पे सेक्शन 14 है इमरजेंसी पावर्स का, जिसमें हम अपनी मर्जी से इलाज कर सकते हैं इन सर्टेन अगर कंडीशंस। आप ये साबित करते हैं कि ये पेशेंट अपनी जान के लिए या दूसरे की जान के लिए खतरा है, जी जी आप कुछ घंटों के लिए, 72 घंटे या कितने, उसका इलाज करके उसको काम डाउन कर सकते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ ट्रीटमेंट की बात नहीं है। जी सर, जी बाहर निकलेगा फिर साइकोटिक हो जाएगा, फिर मारेगा किसी ने। सो फिर जी ये सेक्शंस अप्लाई करते हैं जो ये कनेक्टेड हैं सारे। जी पहला काम असेसमेंट है, जी दूसरा काम उसकी असेसमेंट करके आपको कम्युनिकेट करना है रिपोर्ट बना के, तीसरा काम उसकी फिर असेसमेंट है, फिर हम्म उसके फर्दर काम होगा उसकी ट्रीटमेंट है। हम्म और वो ये सारी चीजें कनेक्टेड है। सो एग्जामिनर को क्यों मौका दें कि वो अगला सवाल पूछे, आप शुरू ही वहां से करें। जी जी सर, जी वो कहता है जी आप कैसे इलाज करेंगे? तो ये इलाज इस तरह होगा कि पहले असेसमेंट होगी, फिर असेसमेंट होगी, हम्म फिर इंटरवेंशन होगी। और इंटरवेंशन ये किस्म की हो सकती है, इमरजेंसी होल्डिंग हो सकती है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो सकती है, और एक्चुअल ट्रीटमेंट हो सकती है जो 6 महीने की है। जी सर, जी इसी तरह है ना? ऐसे ही है सर, बिल्कुल। कोई और मुझसे एक्सपर्ट है तो बता दे, मतलब मेरी समझ तो इतनी है। सो हम पहली दफा में अननोन पेशेंट को कोई इलाज लीगली नहीं कर सकते। जी वो हम पे केस कर सकता है। जी सो इलाज हम सिर्फ उस सूरत में कर सकते हैं जब हम ये साबित कर दें, जो इमरजेंसी होल्डिंग में होता है, कि हम साबित कर दें कि ये शख्स से या इसकी अपनी जान को खतरा है या किसी और की जान को खतरा है। हम्म, ये साबित करें तो फिर हम इलाज इमरजेंसी कर सकते हैं, वरना हम इमरजेंसी इलाज नहीं कर सकते। हम्म और रूटीन में हम मरीज को जैसे हम करते हैं आमतौर पे, पाकिस्तान में जो होता है कि मरीज आया, उन्होंने टीका लाया तो वो टून करके साइड पे कर दिया। नो, वी कैन नॉट लीगली, वी आर अलाउड टू डू दैट। हम्म वी ओके, हैव टू प्रूव as a psychiatrist that this patient is a psychiatric patient, he needs the treatment, this is the diagnosis, this is what the problem is। वो पूरी फोरेंसिक रिपोर्ट का यही हासिल वसूल है। हम्म समझ आती है बात की? जी जी सर, बिल्कुल। सो इस सीक्वेंस में एग्जामिनर को घेरो और अपना वक्त लगाओ, आराम से, तसल्ली से, जल्दी नहीं डाल दें। जी हम कहां से शुरू हुए थे, हम कहां पहुंचे हैं, लेकिन ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं, इनको जरा हम्म ध्यान से। इसमें जब वो डिटेंशन की बात करते हैं, हम्म ठीक है, इस आर्टिकल हम्म में, तो वो चीजें वही डिमार्केट कर रहे हैं। हम्म किधर सेक्शन नीचे है? नहीं, थोड़ा सा ऊपर था वो जहाँ सेक्शंस की बात हो रही थी। करंट सिचुएशन, प्रोविंशियल रिफॉर्म्स, ये
Chapter 7 addresses the protection of the human rights, including confidentiality and informed consent. Chapter 8 dealt with the offenses against persons with a mental disorder, including willfully making false statements so as to discredit someone as a mental disorder. So, ये section जो है, the ordinance period forced detention by police and magistrate up to 72 hours. Prior जी to this, it was 10 days, extendable to 38 days with the magistrate's order. So things changed. 24 घंटे, 14 दिन और 72 घंटे और 28 दिन, ये सेक्शंस है. अब इन सारे सेक्शंस में बेसिकली बात हुई है ट्रीटमेंट जो है, patients could also be discharged to the care of their relatives at any stage of their treatment once they had recovered adequately. जी सर, इसका भी एक सेक्शन है, लीव और ऑर्डर ऑफ लीव, सेक्शन 20. So, वो भी है, लेकिन उसमें बात फिर वही है कि हम किसी भी शख्स का जबरदस्ती पहली दफा में इलाज उस सूरत तक नहीं कर सकते जब तक हम डिक्लेयर ना कर दें कि ये शख्स अपनी जान को या किसी और की जान को नुकसान पहुंचा सकता है. हम सिर्फ असेस कर सकते हैं. पहली असेसमेंट है, फिर इंटरवेंशन है, और लीगल फ्रेमवर्क में उसके टाइम दौरानिया मौजूद है. वो अल्लाह जान नसीब करे, प्रोफेसर इजाज हैदर साहब इस चीज के बहुत एक्सपर्ट थे फोरेंसिक्स के, और वो ये सवाल पूछते थे कैंडिडेट से कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मेंटल हॉस्पिटल्स, राइट? सो मेंटल हॉस्पिटल्स की इंपॉर्टेंस फोरेंसिक केसेस में यही है कि आप उनको 14 दिन के लिए रखते हैं, सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में असेस करते हैं, फिर 28 दिन के लिए रखते हैं, असेस करते हैं, और फिर 6 महीने के लिए रखते हैं और ट्रीट करते हैं. जबकि आम टर्शियरी केयर सेंटर्स में, टीचिंग हॉस्पिटल्स में हम मरीजों को 6 महीने के लिए नहीं रख सकते. वो एक्यूट यूनिट, वहां सिर्फ इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स होती हैं. वहां पे 6-6 महीने के लिए मरीज को दाखिल कर लेंगे तो पूरा जो सर्विसेज हॉस्पिटल का या किसी भी टीचिंग हॉस्पिटल का वार्ड है वो इन्हीं पेशेंट से भर जाएगा. जी. So that is the importance of the mental asylums, mental hospitals. Okay, We sir. need inpatient psychiatric forensic facilities where patients can be detained for a significant period of time, where their assessments and management can be provided. Rest में पेनिटेंशरीज होती हैं, सिक्योर्ड एनवायरनमेंट्स होती हैं जहां पे ये सारे काम होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ना वो है ना वो है. सो बहुत सारी मॉडिफिकेशंस की जरूरत है. यस सर. समझ आई? जी 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 सर. ओके, आगे चलें. जी. ओके, सो हमने आज दो हमने सेक्शंस कर लिए. एक हमने मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस का कुछ पोर्शन कवर कर लिया, और एक हमने आपका रिसर्च का कुछ पोर्शन कवर कर लिया. जी सर, कुछ कैंडिडेट्स थे वो वैसे तो आपने भी बता दिया कि कैसे क्रिटिकल अप्रेजल करते हैं, लेकिन वो जैसे आपको क्वांटिटेटिव या कोई क्वालिटेटिव रिसर्च जब हम चाहे हम जब नेक्स्ट टाइम करेंगे तो उसमें से किसी का ऐसे क्रिटिकल अप्रेजल करवा दीजिएगा. वो भी कर देंगे, लेकिन बेसिकली ये याद रखना कि जब आर्टिकल आप पढ़ें रिसर्च का, यू हैव टाइम एंड ट्राई नॉट टू फिनिश अर्ली. जी जी. Try not to finish early. We all have limitations. मैं साइकियाट्री जितनी मर्जी मुझे आती हो, पर मुझे अभी भी बहुत सारी चीजें नहीं आती जी. कि मैं हर फन मौला नहीं हो सकता. बेसिकली एग्जामिनर को भी ये पता है कि आपको हर चीज नहीं आ सकती, लेकिन आपको ऐसे पोर्ट्रे करना है कि आप एक सेफ साइकियाट्रिस्ट हैं. सो आपने आर्टिकल का टाइटल पढ़ना है, उसका ईयर पढ़ना है, नाम ऑथर्स का पढ़ना है, टाइटल को मैच करना है उसके ऑब्जेक्टिव्स के साथ कि वो दोनों इन अलाइनमेंट हैं कि नहीं है. फिर आपने एब्स्ट्रैक्ट में मेन फाइंडिंग्स सारी देखनी है, मेथडोलॉजी देखनी है, रिजल्ट्स देखने हैं, कंक्लूजन देखना है, और लिमिटेशंस देखनी है. ओके सर. ये इंपॉर्टेंट चीजें, और यही मैंने अभी भी फोकस करने की कोशिश की. ठीक है सर. जी. एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन?
सब समझ आ गया या कुछ समझ नहीं आया? ओके। नहीं ओके। सर, सब समझ आया। ये समझा रहे क्या हैं। है? व्हाट इज दिस? अच्छा, मैंने भी रिवाइज नहीं किया। अच्छा सर, वैसे ये वो है, एमआरआई है। नहीं, अब आप कहेंगे एकदम नहीं बोलना। एकदम नहीं बोलना, सुकून से 25-30 सेकंड लगाएं, इसको देखें आराम से और फिर बोलें, और जब बोलें तो पूरा बोलें। फिर आप 3-4 मिनट बोलें, फौरन नहीं बंद होना। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो, 1 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया। सर सर, एक मिनट एक मिनट। सर, आई हैवंट रिवाइज्ड एमआरआई येट। कोई मैं बात उसकी पूरी डिटेल नहीं बोल पाऊंगी, लाइक वो कोई बात T1 है, जो T2 भी है, है, फ्लेयर है। कोई बात नहीं। जो आता है, जो समझ आता है, बोल दें। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं कमेंट कर सकती हूँ? जरूर करें, आपने करना ही ये केस। सर लेट मी ट्राई, थोड़ा सा मेरा वो रिवाइज हो जाएगा, थोड़ी अपनी सेल्फ असेसमेंट भी हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। व्हाट्स योर नेम? लुजैन। सर आई एम डॉक्टर लुजैन फ्रॉम गंगाराम हॉस्पिटल। माशाल्लाह। ओके लुजैन, आराम से। फिर मैं दोबारा टाइम स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। शाबाश। Sir, the modality given to me is एक MRI brain, and T1 and T2 sequences are provided. एक मिनट, एक मिनट। Sorry. टाइम तो लो देखने के लिए। अच्छा, वो सर आपने पहले दिया था ना, तो फिर तब मैंने देख लिया था। मैं वहां से शुरू कर दूं टाइम ना? अ, आराम से। अब मैं तुम्हारा टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? योर टाइम स्टार्ट्स ठीक है। नाउ। अब इसमें 1 मिनट लो, आराम से देखो, और फिर 4 मिनट बोलो, ताकि 7 मिनट का टाइम खत्म हो। बोलो आराम से, टेक योर टाइम। 1 मिनट लो, दोबारा से। ठीक है सर। चलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी नहीं करनी, सुकून से। एग्जामिनर अगर जल्दी भी डाले ना, फिर भी जल्दी नहीं करनी। Okay, Lujin, now you start. Sir, sir, the modality given to me is MRI brain in axial plane. T1 and T2 sequences are provided. The skull is एक intact. एक एक मिनट, अब मैं फिर रोक रहा हूं। जी सर। देख बच्चे, टाइम बहुत ज्यादा है। शुरू पीछे से करना है। यहां से कहानी शुरू करनी है कि आई वॉज आस्क्ड टू सी एन इमेज। दिस ठीक इमेज है सर। is in black and white color. In my opinion, apparently is an MRI of the brain. ओके सर। फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे चलो। तो पीछे से टाइम है, बहुत टाइम है, आराम से चलो। बोलो दोबारा से, दोबारा से बोलो। Okay. I was given a black and white image to give my comments on. In my opinion, it seems to be MRI brain. It is given in the sequence is taken in axial plane. One film, the A film is T1, and as per my knowledge, the B film is T2. um, as per my understanding, the skull of the individual is intact,
and the norm the फिर तेज जा salkaya रही and garai है, फिर तेज जा रही है, आहिस्ता। क्या इस इमेज में पेशेंट का नाम, डीमोग्राफिक्स, डेट, कहाँ किया गया, किस वक्त किया गया, कैसे किया गया, मेंशन है? सर वो विजिबल नहीं हो रहा है इतना, लेकिन शायद वो मेरे हाथ में हो तो मैं देख सकूं। लेकिन वैसे तो मेंशन्ड नहीं होता है mention ना, नेम और। तो होता है या नहीं होता छोड़ो, जो सामने लगा हुआ है उसकी बात करो। सर नहीं मेंशन्ड। नहीं मेंशन तो बोलो ना कि जी ना, इस पे डीमोग्राफिक्स नजर आ रही हैं, किस पेशेंट का है, मेल है, फीमेल है, किस डेट को हुआ, क्या कंट्रास्ट दिया गया या नहीं दिया गया, यू मेंशन देम ऑल। ओके सर। बोलो दोबारा से, क्या क्या मेंशन होना चाहिए तस्वीर में? सर एक तो नेम, एज, जेंडर, किस हॉस्पिटल में हुआ और किस डेट और टाइम को हुआ, ये मेंशन होना चाहिए। नहीं, और भी चीजें मेंशन होनी चाहिए, किस जगह का स्लाइस है, कौन सा सेक्शन है, और कंट्रास्ट है कि सिंपल है। होता है कि नहीं ठीक उसमें है सर। मेंशन? ऐसे वो जो ऊपर एक पूरी फिल्म में एक स्कल बनी होती है, उसमें ऐसे ऐसे स्लाइसेस लगे होते हैं, और फिर ये वाला स्लाइस कौन सा वाला है, वो इमेज किसे, उससे आप कंपेयर करके बताते हैं, वो भी नहीं मेंशन। सो आपको तो कोई इंफॉर्मेशन जी। नहीं है। जी वो सर। सारी चीजें एग्जामिनर को आराम आराम से बोलनी है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है। अगर फाइंडिंग बता दोगी तो जल्दी फारिग हो जाओगी, फिर वो सवाल पूछेगा गंदे गंदे और फेल करेगा। ठीक है। ठीक है सर। मुझे यही तो बार बार समझा रहा हूं कि टाइम, आराम से, तसल्ली से, शुरू से, आइडियलिस्टिक सिचुएशन से, हिस्टोरिकली समझ के पीछे से शुरू करो। अपना टाइम लो, कोई जल्दी नहीं है। वो तंग पड़ता है एग्जामिनर, पढ़ने दो, तुमने नहीं तंग पड़ना। ओके सर। अब बच्चे दोबारा बोल। अब 5 मिनट बोलना है इस इमेज के ऊपर, 1 मिनट पहले भी रुक गई ना तो फेल हो। चल बोलो। ठीक है सर, इतना कुछ कैसे बोलूं। वैसे मैं सब ट्राई करती हूँ। इसीलिए तो कह रहा हूं बोलो। Uh, the I was asked to comment on a black and white image, which seems to be an MRI brain, according to my knowledge. And the name, age, gender of the individual is not mentioned, and the date and the hospital in which it was conducted is not mentioned either. Um, the section and the section and the administration of contrast is not mentioned as well. um, as far as I think, the integrity of the skull is normal. The sulci and gyri are normal as well, and the contrast between gray matter and white matter is visible. As far as I think, the ventricles are normal, and there is no midline shift. However, um, uh, there is a hypo intense signal in the right temporal lobe in A image, and in which is I think T1 sequence, and in the B image, which I think is T2 sequence, there is a corresponding hyper intense signal. Um, as far as my knowledge is concerned, it seems to be an ischemic patch, and it is in the area distributed by the middle cerebral artery. And I forgot to mention the section earlier. It is taken in the axial plane. Um, and the uh, the thalamus, which is giving iso intense signal, can also be viewed, which is normal. And I cannot find any other abnormality in this image.
अच्छा, अब देख बच्चे, खुद बताओ, 4 मिनट भी नहीं बोल पाए। फिर अगला जी सवाल है, सर। व्हाट इज योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस? व्हाट डू यू थिंक दिस इज? हाउ विल यू फील दैट दिस इज what you are saying? What are the comments related to it? इसीलिए बार बार समझाता हूं कि सुकून से बोलो, उसको सवाल पूछने का मौका ना दो, नहीं तो उसने इतने औखे सवाल पूछने जो आप जवाब नहीं दे पाएंगे और कंफ्यूज होंगे। सो तसल्ली से चलो। और ये जो है ना, इन माय बार बार अपनी लिमिटेशंस का इजहार भी नहीं करना कि मेरे नॉलेज के हिसाब से, मेरी ओपिनियन के हिसाब से, आराम से तसल्ली से। सर, द इमेज आई वाज आस्क्ड टू रिव्यू, generally it appears to be an MRI brain. However, I have my some reservations because of number of the reasons. The demographic details are not mentioned on the image. Usually, ideally, this image should be a complete picture, which should tell me the name, gender, age, address, and other details related to the patient, along with the information whether this image is in axial section or otherwise. I should also have the information related to the dye, contrast, at what time it was given, and what was there, the details related to it. Considering that this could be an MRI brain, I feel that the skull bones appears to be normal. The sulci and the gyri generally are okay. There is no midline shift. The differentiation between other areas, symmetry is also intact. However, there is a hyper dense area in the right temporal area, which probably is the area related to middle cerebral artery. And this could be a bleed, hemangioma, aneurysm, or something related to that. If I will have further details, then my differential diagnosis can be shortened and I can precisely tell you what are the possibilities. But under the current circumstances, when the other details are not available, I will definitely give you a list of differentials. So there is a mass effect, which is irregular, which seems to be in the middle cerebral artery area, and it is not very precise margins. However, it is irregular and bulky and appears to be originating from two roots which are probably associated. It is more likely to be an aneurysm or angioma or a bleed. कितने मिनट हुए? वही सर आई बोला थिंक तो आप बोल रहे हो, मैंने कोई नई चीज अपने पास से जी नहीं दी, सर। लेकिन तसल्ली से, जी हौसले सर। से, आराम से बोलना है, ठीक है? जी सर। जी सर, जल्दी थैंक यू। जल्दी जल्दी नहीं बोलना, आराम से टाइम लगा के। ये जहन में रखो, 8 मिनट है। वैसे 8 मिनट गुजरते ठीक है, पता ओके नहीं चलता, सर। लेकिन ध्यान में वो 8 मिनट बड़ी तेजी से गुजर जाएंगे। लेकिन अगर जल्दी बोलोगी तो वो 8 मिनट जो है ना, वो पहाड़ जैसे लगेंगे। फिर चुप करके उसके उनके सामने बैठ जाओगी और वो सवालों की बुछार कर देंगे। टारगेट नहीं बनना, बिल्कुल भी नहीं बनना, जी सर। ठीक है? एवरीवन क्लियर? यस सर। जी। ओके। अच्छा, ये एक और, ओके, ये कौन बताएगा? ठहरे, मैं इसको
यहाँ से खोलो. Okay. Okay. Can you people see this? जी सर. Okay. चलें, बताएं, कौन बताएगा? सर मैं बता देती हूँ वैसे अभी की ईईजी रिवाइज नहीं की लेकिन आई ट्राई. मैं करती हूँ. हौसले से, तसल्ली से, आराम से, स्पीडें नहीं दिखानी. जी सर. बोले. सर अभी तो टाइम स्टार्ट हो रहा है ना, अभी मैं देखूंगी पहले. 12:13 मेरे सॉरी मेरे 12:13 आपके 9:13 हुआ. अच्छा सर अभी मेरा टाइम स्टार्ट हुआ तो मैं पहले 1 मिनट इसको देख सकती हूँ. आपने 8 मिनट गुजारने मेरे साथ, आप जैसे भी गुजारना चाहें. जी. आप रो के गुजार लें, खामोश होके गुजार लें या बोल के गुजार लें. For all of you, remember, you have to spend time there comfortably. Don't make yourself uncomfortable. सब कुछ आपको आता है, आपको सिर्फ टेक्निकली साउंड होना है, और यही टेक्निक्स हैं जो आपको स्पेंड करनी. वक्त लगाएं, सुकून करें, देखें, उनको लगे कि आप ऐसे गौर और हौस में मसरूफ हैं कि आपसे ज्यादा सियाना दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ. यही इंप्रेशन आपने क्रिएट करना. और इस दौरान अगर हो सके तो पेपर पेन आपके पास होगा, आप लिखना शुरू कर दें कि इसमें क्या क्या चीजें मुझे बोलनी है. वो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप पेन पकड़े हुए हो और आप राइट डाउन करें कि जी ये क्या है, ये कहाँ हुआ, ये कैसे हुआ, ये किसका है, ये किस जगह पे हुआ, सिम्टम्स क्या थे, इंडिकेशन क्या थी, डायग्नोसिस क्या था, और उस बेसिस पे ये जब हुई तो इसमें क्या क्या, इस पिक्चर में क्या क्या खराबियां हैं, उसके बावजूद आप क्या देख रही हैं और क्या पॉजिटिव फाइंडिंग आ रही है. इतनी सारी चीजें बयान करने वाली, तसल्ली से बयान कर. जी सर. हाँ, शुरू जी. करें. जी जी सर. गो है, बोलें. Sir, the image that I'm going to explain shows me some waves in the temporal region of the brain, and if if I'm being more specific, there are 10 leads that are applied in the left subtemporal areas of the brain, and to me this seems that they are EEG leads. However, detailed information is not provided in this image, that is, the demographics of the patient of which the EEG is being done, and the place where it is being done, and the clinical indications for which it was being done is not mentioned in this image. However, according to the image, I'll try to explain whatever I have comprehended. If I talk about the left subtemporal lead number one, it was on the right side. If I start from the right side of the image, it is showing a rhythmic pattern of the wave, and if we move towards the extreme left side, it is showing a different activity of the waves. These are some low wave uh, low wave low frequency waves, probably alpha waves. If we move towards the left subtemporal lead 2, similarly, disturbed activity of the waves starts from the mid of this lead, and it extends towards the right side of the image, and it is displaying a polyspike pattern. Now,
coming towards the left subtemporal lead 3, it is showing a similar uh, rhythmic disturbance as demonstrated in the left subtemporal lead 2. However, it seems of lower amplitude. However, frequency seems similar to me. Left subtemporal four leaves left subtemporal four leads is showing uh, low बस amplitude रुक जाओ, waves. नहीं तो मुझे नींद आ जाएगी। बस यही करना है जो आप कर रहे हैं। तुझे समझ आ गई? इन्होंने राज Sir. पा लिया कि ये कैसे 6 मिनट गुजारेंगी और ये एक एक लीड पे बोलना शुरू हो गई और मेरे कान पक गए। करना यही है। ओके सर। Okay, ठीक sir. है, आराम सर से ये कोई जल्दी से यही करना है कि एग्जामिनर को जल्दी पड़ जाए कि डॉक्टर साहब आगे चले। ठीक है, आपने जल्दी नहीं डालनी। तो आप कहें जी डेमोग्राफिक्स नहीं है, डिफरेंशियल नहीं पता, क्यों ईईजी की, कहाँ पे की, किस तरह की, ये सिर्फ 10 लेफ्ट सब टेम्पोरल रीजन की ही लीड्स क्यों दिखाई जा रही हैं, सारी क्यों नहीं दिखाई जा रही। फिर एक लीड शुरू हो गए, फिर दूसरी शुरू हो गए, और इसमें हाई एम्पलीट्यूड वेव्स हैं, इसमें लो एम्पलीट्यूड वेव्स हैं, इसमें ये फ्रीक्वेंसी है, इसमें ये फ्रीक्वेंसी है। तो 10 लीड्स की एक एक करके बताओगे तो फिर वो पूछेगा अच्छा डॉक्टर साहब निकाला क्या, उसको जल्दी पड़ जाएगी, वो पूछेगा जल्दी में व्हाट डू यू थिंक इज रॉन्ग विद दिस, एंड यू विल से दिस सर इज अ फोकल एपिलेप्टिक चेंजेस। हाँ जी, according to my opinion it might be showing focal temporal lobe epilepsy. परफेक्ट। बस आखिर में ये फिर बोल देना है जी। या वो बार बार पूछेंगे अच्छा डॉक्टर साहब क्या निकाला, बना क्या, क्योंकि वो भी थक रहा है आपको सुन सुन के, राइट, और आप आराम आराम से लगे हैं। फिर वो कहेगा व्हाट इज योर कंक्लूजन डॉक्टर साहब। जब वो इरिटेट होके पूछना व्हाट इज योर कंक्लूजन, कहना कि दिस इज फोकल एपिलेप्सी ऑफ द लेफ्ट सब टेम्पोरल रीजन। डायग्नोसिस दे दिया, बात खत्म। आगे वो कुछ नहीं पूछेगा और इतनी देर में बेल बज जाएगी और आप उठ के चली जाएंगी। ओके ओके सर। बस यही चाहिए, ओके उसको जल्दी पड़ जाए एग्जामिनर को, Okay, sir. आपको जल्दी नहीं करनी। हम्म क्योंकि अगर आपने जल्दी जल्दी बोल दिया ना कि दिस अपीयर्स टू बी लेफ्ट टेम्पोरल सब टेम्पोरल रीजन फोकल एपिलेप्सी, फिर अगले सवाल आने शुरू हो जाएंगे। फोकल एपिलेप्सी में और कौन कौन सी होती हैं, जनरलाइज सीजर में क्या होगा, अगर ये मैं कहूं कि जी ये जो है ये पार्शियल सीजर हैं तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। उसको सवाल पूछने का मौका बेर मिनिमम देना है। जी सर। अंडरस्टूड? जी चल गुड, आज के लिए काफी नहीं हो गया? जी सर, थैंक यू, आपने इतना टाइम निकाला नहीं, हमारी वेरी। मोस्ट वेलकम। So thank you, sir. आपने बहुत अच्छा explain किया. जहन नशीन कर लें, हम्म टाइम वहां पे गुजारें, क्वालिटी हम्म टाइम गुजारें, अप्रोप्रिएट आंसर्स दें, पर जल्दी ना डालें। हम्म। ठीक है, लॉन्ग केस में जल्दी पड़ी होती है क्योंकि 45 मिनट सब कुछ कंप्लीट करना है, वहां जल्दी है जब आप पेशेंट के साथ, तो आपको सारी चीजें देखनी है। लेकिन वहां पे भी जब आप एग्जामिनर के सामने बैठ के प्रेजेंट कर रहे हैं तो सुकून से प्रेजेंट करें, अपनी लिमिटेशंस का भी इजहार करें, वहां पे प्रॉब्लम्स जो हुई उसका भी इजहार करें। पेशेंट नॉन कम्युनिकेटिव था, बोल नहीं रहा था, इंफॉर्मेशन पूरी नहीं आ रही थी, ऑब्जेक्टिव अकाउंट चाहिए, कोलैटरल इंफॉर्मेशन चाहिए, सारी चीजें बोलें, वो बोलें जो रेलेवेंट है। जी लेकिन टोक्स में जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से तसल्ली से देख के समझ के फिर बोलना है, और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस है या आंसर है वो आखिर में देना है, ताकि एग्जामिनर उसके बाद मजीद आपसे सवालात ना करें। बस ये प्रैक्टिस कर ली तो पास हो गए। ओके सर। ठीक है Okay, जी sir. चलो, जाओ, वेंसडे को मिलेंगे, वो टाई अप कर लेंगे फिर इंशाल्लाह। जी सर, मैं आपसे टाइम कंफर्म कर दूंगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह ठीक है, हाफिज। थैंक यू सो मच सर, Thank थैंk you। you, sir. Allah Hafiz. अल्लाह।